Hello, sir. My name is Dharini Sharma. I am final year student of geography from Delhi School of Economics. Sir, my question is, हम POK वापस कब ले रहे हैं? Your question. See, today life is a competition. Competition among ourselves also in a good way, but between countries. So we should not have any expectation that some other country, if they have the ability, that जितनी उनकी क्षमता होगी और जितनी उनकी पहुंच होगी, जितना उनका एम्बिशन होगा, वो जरूर कोशिश करेंगे, वो तो नेचुरल। बट हमें डरना नहीं चाहिए ना, हमें एक किस्म से वी शुड नॉट, हाउ वुड आई से, वी शुड नॉट से भाई ये क्यों कर रहे हैं। वी हैव टू लर्न टू कंटेस्ट, लर्न टू फाइट। एंड आई टेल पीपल, मैं शुरू में मैंने मोहिंदर अमरनाथ की कहानी बताई ना आपको। अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट टीम, वो 1960s 70s में बहुत सहते थे, बहुत झेलते थे। अदर पीपल ट्रीटेड देम वेरी बैडली, बट स्लोली दे बिल्ट अप द स्ट्रेंथ। तो जब ये क्रिकेट वालों से मैं मिलता हूँ, आई टेल देम दैट क्रिकेट की कहानी, मेसी की कहानी एक किस्म से दे वेरी सिमिलर। वी ऑल्सो नीड टू कंटेस्ट, वी ऑल्सो नीड टू कम्पीट। वी शुड से ओके, बिकॉज जो हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी भी अपनी राजनीति है, और किसी भी राजनीति जो है वो एक जगह नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता है। तो ये नहीं है कि एक शासन है हमारे अनुकूल है तो हर समय वही शासन रहेगी। शासन बदलते हैं, हमें जो है सबके लिए प्लानिंग करनी होगी कि भाई ऐसा होगा तो ये प्लान है, वैसा होगा तो वो प्लान है। तो अभी जो है मैं कहूंगा हमारे पड़ोस में वी हैव वही देश जिसका नाम आपने लिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मैं कहूंगा भूटान। अब इन सब देशों में वी हैव टू प्लान कि हमारे रिश्ते किस्म से माने परमानेंट कैसे रहे, कि जितना हम उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं, कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ सकते हैं, या कनेक्टिविटी में, या ऊर्जा में, या टूरिज्म में, या एजुकेशन में, उतनी एक किस्म से स्टेबिलिटी होगी। तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दूसरे देश जो हैं वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ गतिविधियां करते जाएंगे, ये हमें मान के चलना चाहिए। और हमें इसका जवाब जो है रिएक्टिव तरीके से नहीं, पहले से प्लान करके इसका सोल्यूशन देना चाहिए। और वही विदेश नीति की आज जब हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, कि आप देखिए चेंजेस हुए हैं, मैं जानता हूं कुछ अभी, और कभी कभी थोड़ा समय भी लगता है, ये तुरंत नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे साइड से दबाव आता है, या कुछ हमारे बारे में ऐसी चीजें कहते हैं या करते हैं, तो इसकी भी अपनी टाइमिंग होती है। कभी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी पब्लिक में करते हैं, कभी प्राइवेट में करते हैं। बट बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि जो कंपटीशन, वो स्पर्धा की जो भावना जो है, दैट वी हैव टू कीप वेरी स्ट्रांग विद इन अस। So, your question on neutrality and see, diplomacy is not about neutrality. Diplomacy is about option. मुझे फायदा है किसी के साथ जाने में, मैं without hesitation I will go. I have only one thing, national interest. Diplomacy is about national interest. So, if national interest requires me to go with somebody, I will go. Go with somebody else, I will go. Beach mein rehna, I will stay. I have to do good things, I will do. If I have to do bad things, I will do. I have a single guidance. Is my country better off as a result of our action? So that is politics in a way, is because there is, jo aapne kaha, you use the word allegiance. Okay, because in politics is more you are taking sides before, but that applies more to domestic politics. In when you get on the world stage,
the same politics becomes diplomacy. You know, but there is some. I mean, you should be with friends. Credibility does count. You know, because if you are friend to, people will be friends with you if they also believe that there is a loyalty there. So I'm not saying you should keep changing position, but at the end of the day, calculation should be, where does it help my country? And last question, the inspiration question. Look, you sometimes read very powerful books, किसी के ideas होते हैं, or you meet, I still remember, to be very honest, I'm in a university. I still remember many of my teachers. Somewhere, everybody, many of them left a imprint on you, that, I'm talking even to my colleagues and say, that particular teacher, they said this. Sometimes it can be family member. I mean, in my case, I had a father who was very prominent in I would say public life, not political life. Sometimes it can be, it can be your boss. This particular one, definitely. One last question from my side. Good afternoon, sir. I'm Manvi and I'm pursuing botany honors. Sir, your journey has always been so motivating and encouraging. So, whom do you consider your biggest inspiration? I want. Okay. So, your first question, Abhijit, no? Huh? Okay. So, look, definitely during colonial period, this country, was, you can say, robbed, use whatever word you can. I don't think any word is too strong. But the fact was, huge wealth moved from India to UK. Okay. Now, we got independence after a long struggle. We are rebuilding our country. Now, what we have seen is the colonial powers, they are trying to, in a sense, minimize that period. Jaise wo hua hi nahi, put it on the side, chaliye, let us move on. That is the kind of policy that they have. What has also happened is the countries which were colonized, many of them are still fighting a battle to regain their strength. आप लोगों को लगता है like we would be like a average country like this. That is not true. We are among the countries who have rebuilt better. We are stronger. I go to many other countries in Africa, even other parts of Asia, Latin America. They really still, even now, don't have the strength, the capability, the confidence even to do that. So what we are trying to do is today, Modi ji had this policy of organizing the global south. So we are developing countries who mostly were colonized. That together our collective voice will be stronger, and we will try to set an agenda in a way in which some of these wrongs can be corrected. But many of these wrongs require something more radical to do. I don't think we have arrived at that phase as yet. Right now, we are still, in a way, people are trying to develop their own countries to a point where they can be strong and they can stand up in their own ground. आपका जो सवाल जो था, जो आपकी जो feedback जो थी, I think it's interesting because I travel around the world. मैं अलग-अलग प्रांतों में जाता हूँ, गांवों में जाता हूँ. I can see today actually, and sometimes जैसे जहाँ मैंने 1979 में ट्रेनिंग की, जब मैं सरकार में पहली बार IFS में एग्जाम पास हुआ, तो मेरा ट्रेनिंग जो था कर्नाटक के एक गांव में था. After 40 years I went back, but what I saw the change,
and saw the changes which they told me in the last 10 years have happened. और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि घर की स्थिति, वो भी एग्रीकल्चर एरिया है कि फार्मर्स की जो हालत जो है, so I see what you are saying, but I will only say that जितना भी हमने किया है, there is much more to be done. You know, that is why youth is important, because youth will not tire.